Our last lecture we have completed with the topic which was being called to be as index numbers. And today we are going to proceed with the next part which is being called to be as just being called to be as the time series. Can you hear me? मेरा आवाज आ रहा है सब एकदम clear, students? बड़ा इंडेक्स नंबर टॉपिक सब लोग को समझ में आया था. We have completed about last, but we have completed about the two methods which are being used for studying the fluctuating nature of the commodities. सर मुझे बताओ which were the two methods? तो मुझे बताओ बड़ा which were the two methods? Right. One was the fixed base method, another one was the chain based method. Whatever the change in the price which occurs in the fixed base method, it is called to be as price relative, and whatever the changes which occurs with respect to a right, and whatever the change in the price occurs with respect to the chain based index, it's called to be as right. It is called to be as a link relative. But a formula for finding the price relative is P1 upon P0 into 100. What is P1 is the price of the current year. What is P0 is the
Correct. It is the price of the fixed base year. And when we talk about the term link relative, formula for link relative is again the same. P1 upon P0 into 100, where P1 is the price of the current year and P0 is it is the price of the preceding year. But when we want to study the year to year fluctuation, year to year fluctuation, so we have to prefer which method? When we want to study the year to year fluctuation, so we go for which method? For one year fluctuation, we have to go for the correct. We have to go for the chain based method. Correct. So today, I will be starting with the new topic, last part of the syllabus, which has been called to be as time series. So ready on? When we are going to study but about this chapter time series, so in the real sense, you should know what is the meaning of the term time series is. What is the meaning of the term time series is? Right, so ready. So let me start with the first with the meaning of the term time series. The meaning of the term time series. So there you go. What is the definition of the time series is? What is the definition of the time series? When the quantitative when the quantitative data are arranged in the order of their occurrence or the historical order, the resulting statistical series, it has been called to be as the time series. When the quantitative type of data, the word which I have been used is the quantitative. The word which I have been used is the quantitative. So, मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? When I'm using the word quantitative, tell me what is the meaning of the word quantitative means? Quantitative का मतलब क्या होगा? ये तुम लोग को मैंने फर्स्ट उसमें पढ़ाया था. Quantitative means yes, the data which can be expressed in the terms of numbers. It is being called to be as the quantitative type of data. It is being called to be as the quantitative type of data.
which is being arranged, which is being arranged in the order of their occurrence or the historical order. Now, when we are talking about the term historical, historical और डिपेंडिंग अपॉन देयर अकरेंस बड़ा, तो ये दोनों वर्ड्स को बड़ा एक सिंपल टर्म जो है वो इजीली रिप्लेस कर सकता है बड़ा, और वो है बड़ा क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल बड़ा, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर अकरेंस बड़ा, द रिजल्टिंग सीरीज बड़ा, इट इज बीन कॉल्ड टू बी एज द टाइम सीरीज बड़ा। तो हियर बड़ा, in this given time series, we can say that this time series, these are the data related to the पढ़ाई के लिए time. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का Related साथी। to the time observations taken at a specified intervals, they have been taken at the specified intervals. The interval, it may be year, month, week. Make a correction, the spelling of the week is wrong. W double E K week. Week, day, hours, है ना? But out of this, the preferable is always the year. Preferable, it is always the year. When we consider the time interval, है कि नहीं? The time interval is preferably, it is taken to be as the year. It is very important to know in all the sciences how the condition change with respect to the time, how the condition it change with respect to the time, और अभी का लेटेस्ट तुम लोग देख सकते हो कि ड्यू टू पैंडेमिक है ड्यू टू दिस पैंडेमिक 2020 में तुम लोग ने देखा ना how the conditions they have got worse, how the condition they have got the worst, ये तुम लोग ने ये पैंडेमिक में देखा होगा यहाँ पर कितने सारे बिजनेसेस जो है वो कॉलेप्स हो गया। मैं जो बोल रहा हूँ तुम लोग को समझ में आ रहा है सब लोग को, है ना? जो कंपनी ने जो पहले सोचा होगा कि 2020 में मेरा कंपनी इतना प्रॉफिट करेगा, वो पूरा का पूरा जो टारगेट है वो पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो गया। इकोनॉमी जो है वो पूरी तरह अफेक्ट हो गया, है ना? अफेक्ट क्या हो गया वो पूरी तरह गिर के तो नेगेटिव में चला गया। जीडीपी एकदम डिक्लाइन हो गया। So here in this case, there are various factors which may affect the time series. That factors, it can be the external factors, or it can be the internal factors, which can affect the time series, which can affect the time series. Economics पढ़ते हो ना तुम लोग economics, तो तुम लोग ने economics में पढ़ा होगा कि there exists a relation between the price and demand. There exists a relation between a price and a demand. बताओ what kind of relation it exists between the price and demand? Price and demand के बीच में
Yes, madam. There exists a inverse relation madam, between a price and demand madam. Again, मुझे बताओ, as the price madam, of a commodity madam, goes on increasing, demand for that commodity madam, it will go on. As the price madam, increases, the demand continuously break हो रहा है. Continuously मेरा आवाज बड़ा कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा है. तुम लोग मैसेज करो जरा फटाफट फटाफट प्लीज. क्लियर आ रहा है ना मेरा आवाज बड़ा? किसको प्रॉब्लम हो रहा है बड़ा आवाज में? आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा, 1 मिनट रुको. अभी देखो बड़ा स्टूडेंट्स, अभी आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? नाउ इट इज क्लियर. मैसेज करो फटाफट मुझे. एकदम परफेक्ट आ रहा है ना? कट नहीं हो रहा है ना आवाज?
चलो रेडी। तो मैं क्या बोल रहा था बड़ा तुम लोग को कि प्राइस एंड डिमांड बड़ा both of them बड़ा are inversely proportional to बड़ा each other, are both of them बड़ा inversely proportional to बड़ा each other. As the price of a commodity बड़ा it will go on increasing बड़ा, the demand बड़ा will go on the demand बड़ा it will go on प्राइस जैसे जैसे बड़ा इंक्रीज होते जाएगा ऐसे ऐसे बड़ा करस्पॉन्डिंगली डिमांड क्या होता जाएगा, जो डिमांड जो है बड़ा वो डिक्रीज हो जाएगा, डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मारा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे तुम लोग मुझे बताओ बड़ा कि डिमांड जो है बड़ा क्या वो खाली बड़ा एक ही फैक्टर से खाली प्राइस से ही बड़ा अफेक्ट होता है,